Hello friends, welcome to English with Ahmed. This is the new series of short videos in which we try to answer the basic questions that are related to basic grammar. In our first video, we had learned the rules of forming and writing present indefinite tense and to convert it into interrogative and negative sentences. In our today's video, we are going to learn how to use present indefinite tense. So friends, in our previous video we had discussed the basic principles and rules for writing present simple tense or present indefinite tense, and in our today's class, this is the second class of the same series, and in this today's very short video we are going to learn the uses of present indefinite tense. So majorly there are two major uses for present indefinite tense. The first one is when we use it for permanent or scientific facts. इन जो मतलब ये हुआ तो जॾहिं बि असांखे का बि अहिड़ी ॻाल्हि करणी आहे जेको को साइंसी सच आहे या को अहिड़ी अणमिट हक़ीक़त आहे जंहिंजो केरु इनकार करे कोन थो सघे, त उन जे लाइ असां प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमालु कंदा आहियूं. मिसाल जे तौर ते वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. साइंसी सच आहे त पाणी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ते उबरंदो आहे. द सन राइज़िस इन द ईस्ट. सिज ओभर खां उभरंदो आहे. ऐं को बि परमानेंट फैक्ट जीअं असां चऊं था दिस रोड लीड्स टू कराची, हीउ रस्तो कराची वेंदो आहे. ये अहिड़ा मामला आहिनि जिन जो तव्हां इनकार नथा करे सघो. नंबर 2, यूज़ इट फॉर टेलिंग समवन्स हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस. कंहिं माण्हूअ जी का आदत या का अहिड़ी किरत या एक्शन ॿुधाइणो आहे जेको मुसलसल या वरी वरी थींदो हुजे, त उन जे लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस. जीअं मिस्टर जॉन टीचेस एट द सनसेट अकेडमी. मिस्टर जॉन सनसेट अकेडमी ते पढ़ाईंदो आहे. या राहिल ऑलवेज कम्स लेट. इहा राहिल जी आदत आहे त हू हमेशा देर सां क्लास में ईंदो आहे. दिस ट्रेन यूजुअली अराइव्स इन टाइम. हीअ ट्रेन आम तौर ते वक़्त ते पहुचंदी आहे. ऐं कंहिंजी आदत ॿुधाइणी आहे जीअं शी वेयर्स ब्रांडेड स्टफ ओनली. हूअ सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ब्रांडेड सामान इस्तेमालु कंदी आहे. So these are the two uses, the major uses of present indefinite tense. Like, follow and share for more such content, and you can also ask such questions which are related to the basic grammar, and I will try to make the videos for them. Thank you so much.